What is the formula? As you can see on the screen, first group of verbs, ER verb. It's clearly mentioned there. All regular verbs whose infinitive ends in ER belong to ER group. The verbs ending with ER, they fall under ER group verbs, right? The first point. Second is the present tense of ER verbs is conjugated by removing ER. तो how we conjugate ER group verb? हम जो इसका radical है ER, we remove that radical. हम last का ER radical को remove कर देते हैं और उसकी जगह what we put E, ES, E, ONS, EZ, ENT, right? So as you can see below, there is an example. The verb is parler. Parler means to speak. Okay, the verb is parler. इस verb का मतलब होता है to speak. In French, to speak is parler, right? But first of all, before conjugating the verb, you must be aware what are the subjects in French. So in French, the subjects are je, tu, il, elle, nous, vous, il, and elle. These are the subjects, right? So you have to learn these subjects. Yesterday, I have just already explained my students that how to pronounce subjects and how to accord the verb. Okay. So first of all, verb, आप सबको what you need to learn कि French में subjects क्या होते हैं. So as its example is given below, you can see. So J means I. Next, second person is tu, means you. Il means he, and elle means she. Nu means we. Vous means you. Now there are two you in French. Tu is tu. It is informal. So when we are talking to the person who is younger to us or of same age group, so we use the subject tu, tu. It means you, but it is informal. We cannot use this subject for the elders one. Now VOUS is a subject that we can use for the person who is like more in age, and to give respect and regards, we use the subject VOUS, right? ELLE, L means she, NOUS, no means we, VOUS again it means you, but it is formal. हिंदी में जैसे कि आप अपने से बड़ों के लिए. Then plural of ill, ILS, ill, it means they. Then plural of L is ELLES. इसको भी L बोलेंगे because in French language the last letter remains silent. We are not speaking English. When we speak French, so the last letter of every word remains silent. It is the rule of French language. I have number of times I have shared this in class. But when we will find 6 vowels in the end of the words, जब किसी भी word के last में 6 vowels आते हैं, तो हम उन letters को sound करते हैं. सर एक बारी दोबारा रिपीट करके बताना सर एक बारी. Okay, fine, no issues. In French language, the last letter of word remains silent. अब आप कोई भी word French में बोलते हो, जो उसका last letter होता है, वो silent रहता है. When we speak French, it is a rule of French language. But last का letter हम तब pronounce करते हैं in case there is any of 6 vowels. English में we have studied about 5 vowels, but in French language there are 6 vowels. H is an extra vowel in French language. Till now in English you have studied about 5 vowels. In French there are 6 vowels. H is an extra vowel. तो जब किसी भी word के last में ये 6 vowels आएंगे, तो आप उनको pronounce करोगे. और अगर 4 consonants, कौन कौन से? C, F, L, R. If these 4 consonants will come at the end of any word, then again you will pronounce, you will sound this word. Rest of the word will remain silent. Okay, so this is a list of the subjects: je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Right? ये subject है. इन subject के साथ आप कोई भी verb conjugate करोगे. Now look here. अब हमारा group ER है, तो first of all हम क्या करेंगे? जो हमारा radical ER है, हम इसको remove कर देंगे. Then we will write only PARL.
PARL RL PARL 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 and PARL. So now first step what you will do, जो हमारी verb है, the verb is parler, it means to speak. अब इसमें से हमने क्या करा, हमने radical er को remove कर दिया, इस radical को remove करके and rest of the part we kept writing like that. हमने बाकी का बचा हुआ पार्ट इसको एज इट इज लिख दिया, PARL PARL PARL, राइट. तो आपको सब सब्जेक्ट के साथ ER हटाकर बाकी की वर्ब के पार्ट को एज इट इज लिखना है. यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क मी. हमने सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू राइट ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. सेकेंडली, हम जो भी वर्ब कॉन्जुगेट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें से ER जो इसका रेडिकल है उसको रिमूव करके बाकी के पार्ट को एज इट इज लिख देंगे सारे सब्जेक्ट के आगे, राइट. यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट देन प्लीज यू कैन आस्क मी. Yes, sir. Okay, fine, perfect, Clear. fine. Now the time has come. Now the time has come to accord the formula. ठीक है. Excuse me, अब sir. यहाँ पे yes बेटा, yes. सर ये थर्ड नंबर समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है. थर्ड नंबर कौन सा, IL वाला? यस सर. ओके बेटा, ये सब्जेक्ट लिखा है मैंने, ये सब्जेक्ट है बिकॉज आई कैन नॉट टाइप ना इस पे मोबाइल के, आई एम नॉट, इट्स नॉट इजी टू राइट ऑन मोबाइल विद फिंगर. आई विल सेंड यू फोटो कॉपी ऑफ दीज, डोंट वरी. आई विल शेयर दिस printouts on the group so you can see in that. Okay, don't worry. ये इनके बगल में जो आप बोल रहे हैं ER हटा के और लगा देना है, क्यों? हाँ, अब ये जो ER हटाना है ये फॉर्मूला है. नाउ दिस इज फॉर्मूला. अब ER हटा के आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऐड करना है, दैट इज ES E N, यहाँ पर आएगा ONS, here it will come EZ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, here it will come ENT, राइट. तो आपको क्या करना है, ये ER रिमूव करके ये फॉर्मूला अकॉर्ड करना है, ES E ONS EZ ENT. मैं इसको फिर से आपको समझाता हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस. आई विल राइट इट अगेन विदाउट सब्जेक्ट्स. So now I will not write subjects, simply I'll write the verbs. Yes sir. Okay, so the formula is ES ONS EZ ENT and ENT, right? So हम क्या करेंगे, ER रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पे ES ONS EZ ENT को ऐड कर देंगे. So whenever you are going to conjugate ER group verb, regular verbs, I'm talking about regular verbs. So dear students, you will use this formula and you can conjugate any verb. आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी रेगुलर वर्ब कॉन्जुगेट कर सकते हो. इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर सर. तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. आपको ये पता होना चाहिए ER ग्रुप के लिए मेरे को ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है एंड आई कैन कॉन्जुगेट एनी ER रेगुलर वर्ब. सो लेट्स गो टू द अगेन, I'll just share it on that. Right. So now, as you can see on the screen, the verb parler is conjugated, right? You can see below. The verb is parler. It means to speak. Now, what they have done, they have removed ER and at place of ER, they have added ES, ONS, EZ, ENT and ENT. This is the verb I'm talking about, dear student. Parler verb, to speak, right? So, je parle, I speak. Tu parle, you speak. Il parle. Please pay attention how to pronounce these subjects, right? Because we are learning French not only to mention in our CV. Whenever we will sit in any kind of interview and you will mention that, yes, I can speak French, je parle langue français. So that person might ask you
that okay, I'll take your French verbal interview with some French expert. So you must know how to pronounce. आपका pronunciation भी accurate होना चाहिए. Tell them clearly that we know the basic of French, but you must be accurate at the time of speaking that particular language. आपका pronunciation नहीं होना, ये नहीं आप बोल सकते हो sir, I can only write, because in hotel industry, this industry is all, you must be dynamic while you speak English. Your communication skills has to be perfect. Plus, if you mentioning that you know a foreign language, that is ice on cake, then you must know how to speak a language. So please, when I speak French, try to speak after me silently. Is it clear? Speaking is must. So, je parle, I speak. Tu parles, you speak. Il parle, he speaks. Elle parle, she speaks. Nous parlons, we speak. Vous parlez, you speak. Il parle, they speak. And elle parle, they speak. सो जो ENT वाला सेगमेंट है उसको भी हम पार्ल बोलेंगे, बिकॉज लास्ट में टी साइलेंट रहेगा, और इसको पार्लन नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको पार्ल बोलेंगे. इज इट क्लियर? अगेन आई विल रिपीट. Attention s'il vous plaît, please see how to pronounce subject and verb both. So JE is je parle, I speak. Tu parles, you speak. Il parle, he speaks. Elle parle, she speaks. Nous parlons, we speak. Vous parlez, you speak. Then plural form, il parle and elle parle, they speak. So this is how you would be going to conjugate all the regular ER group verbs. Right? हम क्या करेंगे? ER radical को remove करेंगे, and subject wise हम क्या formula कोड करेंगे? E, ES, E, E, ONS, वो के केस में EZ, और ILL के plural में ENT, ENT. So with help of this formula, you would be conjugating all the regular verbs. For one more example is given here, as you can see at the right of this. The another verb is habiter. Okay, the another verb is given is habiter. It means to live. अब some of you might ask me, sir, इसको habiter क्यों नहीं बोल रहे हैं? Why it is a sound? So whenever there will be vowel after H, तो आप उसको silent ही रखोगे H को, right? क्योंकि A के बाद vowel आ रहा है, तो उस vowel के sound से आप start करोगे. तो the verb is habiter. Habiter means to live, right? So again it is ER group and it is regular group. तो इसको कैसे conjugate करना है? Same वही करना है. सबसे पहले आप subject को लिखोगे, उसके बाद जो group का radical है ER, you will remove that radical and you will place the formula E, ES, E, E, ONS, EZ, ENT, ENT. Right? So same like parler verb, you would be able to conjugate habiter verb also. How to sound it? Let me explain. So one thing I want to add here, just read below. There is a note. J is shortened to J apostrophe before vowels and silent H. एक लाइन लिखी है verb के नीचे. If you can see, I think note, एक note करके point है. जब भी हम J subject को conjugate करते हैं, dear students, okay? जब आप J की conjugation करते हो और J के सामने कोई भी verb है, अगर वो verb vowel beginning है, if the verb is starting with vowel, तो हम उसको क्या करेंगे? J को J apostrophe करके लिखेंगे. Is it clear? तो इसको हम हाँ, इट्स वेरी सिंपल. जब भी J को आप कॉन्जुगेट करोगे और उसके सामने कोई वोवल बिगिनिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पर आबिते वर्ब है, H इज अ वोवल, तो क्या करेंगे? हम E हटाकर J के आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा के, एज इट्स मेंशन हियर, एंड वी विल राइट द वर्ब जाबीत मींस टू आई लिव. ओके, सो जाबीत मींस आई लिव. नेक्स्ट इज त्यू आबीत, यू लिव. इल आबीत, he lives. Elle habite, she lives. Nous habitons, we live. Vous habitez, you live. Ils habitent and elles habitent. Right? Now I want any of you to speak this verb, to read this verb, especially from BHM City. Second batch. So can I? Yeah, please go ahead.
जा habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, Dieu habite, il habite, elle habite. What's your name, dear? Sir Kunal Kumar, BHMCT 4th year. Okay, Kunal. Though you have already studied this, but Kunal, Yes. one thing is wrong in your pronunciation. आपने क्या करा, आपने लास्ट में ए का साउंड ऐड कर दिया ई के ऊपर. हाउ? जाबीते, त्यू आबीते, इल आबीते, ए. व्हाई दिस ए साउंड? इसको सिंपल आपको बोलना है जाबीत, जाबीते नहीं. त्यू Okay. आबीत, आबीते नहीं. ओके? Okay, sir. इल Yes, sir. आबीत सबके लिए, not only for Ankur, like for him, at least. So nice of you that you taken this initiative. You spoke, you sir. tried. So it is not a, it is simple a sound आएगा इसमें. इल आबीत, एल आबीत. ओके? नु आबीतो नहीं, नु जाबीतो. अब यहाँ पर आप कहोगे सर ज साउंड क्यों आ रहा है? नु के बाद आबीतो क्यों नहीं बोल रहे हो आप नु जाबीतो क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मैंने अभी क्लासेस में बताया था, डे बिफोर यस्टरडे, बच्चों को रूल बताया था. फ्रेंच लैंग्वेज में जब दो वोवल्स के बीच में कोई कॉन्सोनेंट आता है, attention s'il vous plaît, whenever you will find a consonant sandwich between two vowels, तो Okay. साउंड ज हो जाता है. ये फ्रेंच लैंग्वेज का रूल है. whenever you will speak French language and you will come across the scenario जहां पर दो वोवल्स के बीच में कोई भी साउंड कॉन्सोनेंट आएगा, तो साउंड ज हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पर नू आबितो की जगह मैं नू जाबितो बोल रहा हूँ, उसका रीजन है नू में यू एस आ रहा है और नेक्स्ट वर्ब एच से स्टार्ट हो रही है, तो यू और एच के बीच में एस आ रहा है, राइट? Yes. Yes, sir. तो यू इज अ वोवल एंड एच इज अ वोवल और इसके बीच में एस इज कमिंग, Yes, sir. so the sound will be z. Z. नू जाबितो. अब आप Z. कहोगे सर इसमें तो गैप आ रहा है, ये तो कॉन्टिनेशन में नहीं है. Continuation में. हार्डली मैटर्स, चाहे वो कॉन्टिनेशन में आए या ऐसे आए. तो जब भी दो वोवल्स के बीच में यू विल फाइंड अ कॉन्सोनेंट, द साउंड विल बी ज. नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल, वू जाबीते. सो हियर नाउ यू और एच के बीच में अगेन एस इज देयर, Yes, V O sir. U S then H A. So you और H के बीच में ऐसे तो नहीं, it will be वो zabite. The sound will be z, not abite. See, when we write French, it is bit easier, my dear students. French लिखना is bit easier, but when you speak French, then it is bit complicated. I will not say it is the rocket science, because if you are aware with these basic points that I keep on telling in my each and every class. So remember these basic points in your brains, then you will not commit any mistake while speaking French. And again, for you people, it is very nécessaire. It is very important to speak French in right pronunciation with right accent. ठीक है? Accent का कोई नहीं होना चाहिए. ये बेसिक चीजें इंटरव्यू में नोट की जाती हैं, राइट? बिकॉज हॉस्पिटैलिटी इज ऑल अबाउट मोर इनटू स्पीकिंग. हमारे पास गेस्ट आते हैं, वी डील विद पीपल, तो हम उसमें मोर इनटू क्या हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, राइट? सो वर्बली वी हैव टू बी परफेक्ट. either we speak English, either we speak French, we have to be confident and we need to speak with right pronunciation. Sure, sir. So by this I'll end this group because I don't want to take that much of time. Yesterday I have already taught, right? So this is the first group, ER group, and I have shared the formula that how you can conjugate ER group verbs, but only regular verbs. If you come across any irregular verb, in that case you cannot use this formula. Then you have to practice that verb. आपको उसको learn करना पड़ेगा by writing. Is it clear? अब ये मत सोचना कि सर कोई भी यार ग्रुप वर्ब दिखी तो हमने फॉर्मूला लगाया और उसको कॉन्जुगेट कर दिया. No, this is only for regular group. Now the second question that should come from your end, that sir हमें पता कैसे चलेगा कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, इररेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? क्योंकि जब तक पता नहीं होगा हम उसको फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे? So my dear students, by practice and slowly आपको पढ़ के when you will come across verbs, I'll share the list, तो आपको ये खुद learn करना पड़ेगा. You have to take care of it कि these are the list of verbs which are regular that can be conjugated with the formula. On the list of irregular verbs I'll tell you, and you have to make note of those verbs that these are irregular verbs. आपको learn करना पड़ेगा, right?
Sure, sir. So now let's move to the second group of the verb. This is the first group. So the second group, it's mentioned here, verb whose infinitive ends in IR. Okay. So now the verbs ending with IR, that falls in IR group verb. So let me share the formula for that also. Yes, VHM City second year batch NB, who will repeat what are the subjects for pronunciation? कल पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में. Second semester, sir, not second year. So it's second semester, sir. Yeah. Gargi, beta, can you read the subject pronunciation? Yes, sir. I want to hear. Yes, sir. Please. Read. J, tu, il, el, nu, vu, il, el. Trebia. Perfect. Very nice. See, exact pronunciation. See, I have told you that you have to be confident. Don't hesitate. Don't be nervous that French is that difficult. See, any language, it's not about French. All language, they have their own some logics and rules. In beginning, everything is difficult. But there is a very famous proverb that well begun is half done. If your beginning is good, if you have shown the courage, then it means half of the path you have covered. So please be in the class with positive frame of mind. Don't be hesitate and don't think negative that it is tough, it is not easy, and I have to put efforts. See, without putting efforts, we cannot get anything in our life. It's not about learning French. Even if I talk about your IHM course or anything, engineering, doctorate, whatever we do, without paying efforts, we do not get fruitful results, right? So just believe in yourself and just be regular in the classes, attend the classes, and please practice. Don't think that while attending class you will be able to speak French, you will be able to speak right French. The first priority, you must be in the class, right? Because see, now what else you need from your college side? Principal sir, he has just made such a nice arrangement for all of you to be part of these classes. And after that, if still you people do not attend and you do not encash this, then see, you are not that serious for your career prospect. So please, thank you for your reply, dear. So now the subjects are je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, right? Now what we will do, so we will remove R from the verb and rest of the part we will write F-I-N-I, 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 right? So हम क्या करेंगे, पहले हमने subjects को लिखा, अब हम verbs, जो हमारी verb है फिनियर, उसमें से R को remove करके बाकी का पूरा verb को लिख देंगे as it is, और उसको लिखने के बाद हम इस फॉर्मूले को इसमें ऐड कर देंगे. तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जे में हमें क्या ऐड करना है, एस, क्यू में क्या ऐड करना है, एस. देखो यहाँ पे रेड पेन से दे हैव ऑलरेडी क्लियरली हाईलाइटेड फॉर्मूला. इन्होंने रेड पेन से इसलिए यूज करा था कि पता चले कि ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है. सो इन केस ऑफ इल वी आर एडिंग टी, इन केस ऑफ एल वी आर एडिंग टी, इन केस ऑफ नु वी आर एडिंग डबल एस ओ एन एस, इन केस ऑफ वू वी आर एडिंग डबल एस ई जेड. In case of plural ill, then again double S E N T, and in case of plural L, double S E N T. Now I'll make your task more easier. मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूँ. हम जब भी verb को conjugate करेंगे, though we have to learn this formula, but always remember, either you are doing ER group or you are doing IR group verb. आप कोई भी group का verb कर रहे हो, regular, irregular, तो जो conjugation ill की होती है, the same conjugation goes to L. ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं ताकि आपका टास्क थोड़ा और इजी हो जाए, ठीक है? हम जो कॉन्जुगेशन इल की होगी किसी भी वर्ब में, वो सेम कॉन्जुगेशन एल की होती है, और जो कॉन्जुगेशन इनके प्लूरल फॉर्म की होती है वही कॉन्जुगेशन प्लूरल एल की होती है. एज यू कैन सी, टी, टी, इल और एल की बात कर रहा हूं मैं, उनके प्लूरल में भी सेम लास्ट में डबल एस सी एन टी, डबल एस ई एन टी आ रहा है, ठीक है? सो इससे थोड़ा आपको और इजी हो जाएगा वर्ब्स को लर्न करना कि एटलीस्ट कुछ तो रिजेम्बलेंस है. सो राइट, सो नाउ व्हेन यू वुड बी डूइंग IR ग्रुप वर्ब्स, सो व्हाट फॉर्मूला यू वुड बी यूजिंग, हम R को रिमूव करेंगे और इन प्लेस ऑफ R वी विल ऐड दिस फॉर्मूला, राइट? Yes, sir. And so below there are
some list of verbs that can be conjugated. They are regular verbs. आप इन verbs को same इस formula की help से conjugate कर सकते हो. But I want to ask here one thing. Any student, either 4th year, 1st year, 2nd year, that you have any doubt that sir, still I'm confused that how to conjugate ER group, yeah, how to conjugate IR group verb, and sir, how to use the formula. Any student who is still confused here, not still able to find that how we can conjugate the verb, please feel free to raise your hand. Can I request you to pronounce, to say this IR group, je finis and stuff, you know, and Yeah, ask yeah, sure, the definitely. students to do it also, please. Yeah, sure, sir, definitely, sir. I was coming to that only because first of all, I hope that the formula is clear with everyone. So now the verb is finir, means to finish, and how to conjugate, how to sound. Je fini, the last s will be silent. Tu fini, again s will be silent. Il fini, t would be silent. El fini, t would be silent. So it means the 4 subject have same pronunciation. Je fini, tu fini, el fini, il fini, right? Now coming to next, nous, subject nous. Then it is nous finissons. Whenever double s will come, the sound will be sa. Nous finissons. Vous finissez. Il finissent. Elle finissent. Again, I'll repeat. Je finis. Tu finis. Il finit. Elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. Right? Once again. Je finis. Tu finis. Il finit. Elle finit. Same. Nous finissons. Vous finissez. से लास्ट में से आ रहा है, मीन्स टू से कहना, याद रखना, फिनी के आगे से लगा दो. नेक्स्ट अगेन एल, इल फिनिश, एल फिनिश. राइट नाउ गार्गी, कैन यू रीड इट बेटा? Yes, sir. प्लीज गो अहेड. Je fini, tu Très bien. fini, il Good. fini, elle Very nice. fini, Very nous nice. finissons, Très vous bien. finissez, il Very nice. finissent, elles Very nice. finissent. Super. Perfect. Very nice. Anyone else who would like to try once? Come on. Sir, sure. Can I, Give it a sir? try. Yeah, sure. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Superb. Très bien. Very well. Anyone else who would like to try? Yes, sir. Yeah, please go ahead. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Fine. You were not that loud and audible, but still I was able to get your voice. Please mute yourself. Yeah. So now, like this, there is a list of verbs given. The verb is choisir, means to choose. This verb is again conjugated like finir verb. It is for practice. You will do it and then I'll see. Then next verb is grondir. Grondir means to grow tall. Third one is grossir. Grossir, to grow. Rougir is to redden, to blush. Remplir is to fill, like remplir, filling a form, filling a pen, anything. Réussir, to succeed. Réussir. Again, I'll repeat this word, then we'll discuss them and I'll check your conjugations. Then maigrir is to become thin, that is maigrir. Next is obéir, to obey, obéir. And the last one is punir. Punir is to punish, right? So again, as in homework, you will do the conjugation of these verbs. Then we can see. And again, coming back to basics, that whatever you're learning on daily basis, please make it a habit that you must practice. Just give half an hour. See, it's just a beginning and you are learning verbs. It is something somehow bit technical things we are learning, formula. आप इसको रट्टा नहीं मार सकते हो, dear students.
ये formulas, ये verbs, you cannot cram these verbs. So please, I request you that just it takes half an hour. Whatever you're learning on daily basis, make a register, just pen it down, make a rough register, and just keep on practicing in that.